Welcome to RPN. And it's time to learn with RPN. Let's think and speak English. Hello everyone. Let's go to the first section of this chapter, and that is structure. Today we will also learn some important structures, so please pay attention. Here is a structure, action properly. जब भी हमें किसी को बोलना हो कि कोई काम अच्छी तरह या ध्यान से करो, प्लीज यूज स्ट्रक्चर एक्शन प्रॉपर्ली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को बोलना है कि अच्छी तरह बोलो, प्लीज यूज एन एक्शन स्पीक इन दिस स्ट्रक्चर एंड से स्पीक प्रॉपर्ली. अगर आपको किसी को बोलना है कि अच्छी तरह सुनो, प्लीज यूज एन एक्शन लिसन in this structure and say listen properly. So guys, please listen properly while watching videos. Now we are going with more structures. अगर आपको किसी को बोलना हो कि कोई काम या एक्शन यहाँ करो, please use a structure action here. For example, यहाँ देखो, see here. अगर आपको किसी को बोलना हो कि कोई काम या एक्शन वहाँ करो, please use a structure action there. For example, वहाँ खेलो, play there. अगर आपको किसी को बोलना हो कि कोई काम या एक्शन जल्दी करो, please use a structure action fast. For example, जल्दी आओ, come fast. अगर आपको किसी को बोलना हो कि कोई काम या एक्शन आराम से करो, धीरे से करो, please use a structure action slowly. For example, आराम से चलो, walk slowly. अगर आपको किसी का नाम लेके बोलना हो कि कोई एक्शन उसकी तरह करो, प्लीज यूज अ स्ट्रक्चर एक्शन लाइक समवन. फॉर एग्जाम्पल, सौम्या की तरह बोलो, स्पीक लाइक सौम्या. लेट्स डू प्रैक्टिस हियर. Here are some actions. Please pause the video and start speaking after using each action one by one. Hope you did practice well. अगर आपको इन एक्शंस के लिए मना करना हो तो प्लीज यूज डोंट. Now you can see new structures for denying any action. Please pause video again and start speaking after using each actions again in all the structures one by one. Let's go to the next section for some important actions. Here is the first action. नाश्ता करना या लंच करना या फिर डिनर करना. An action will be take breakfast, take lunch, take dinner. For example, take light breakfast. Take lunch here. Don't take dinner outside. Here is the next action, झाड़ू लगाना. It means sweep the floor. For example, don't sweep the floor in the night. Here is the next action, पोछा लगाना. It means mop the floor. For example, mop the floor properly. Here is the next action,
पौधों में पानी डालना. It means water the plant. For example, water the plants like me. Here is one more action. कोई लिक्विड चीज जैसे पानी, लस्सी, जूस डालना. It means pour something. For example, pour milk for me. Hope you have understood all actions properly. Let's go to the next section for daily use sentences. कई बार हम किसी को काम बताते हुए अक्सर बोलते हैं, ऐसे करो. Please say in this situation, do like this. और do so. कई बार हम किसी को काम बताते हुए ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे मत करो. Please say here, don't do like this. Or don't do so. Let's go to the next section for word for a person. Here is a fat man. Cat is also there. Now we have a new word, fat cat. It means moti asami. So guys, we can say fat cat to a very rich person. For example, वो बहुत धनवान है. He is fat cat. Guys, are you fat cat? Let's go to the next sections for idioms and proverbs. कई बार आपको लगता है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है. तब आप बोलते हैं, राज खुलने दो. It means let the cat out of the bag. एक बार सस्पेंस मूवी देखते हुए मेरे दोस्त उसका एंड बता रही थी, तब मैंने बोला, Don't let the cat out of the bag. Here is the next section, practice, practice and practice. Thank you guys.